Probability and statistics. Okay. We have 4 units. Okay. पेपर में बेसिकली हमें करना है क्या है इस पेपर में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कंबाइन एप्लीकेशन वी हैव टू सी. ठीक है, बट फॉर बिफोर दैट कुछ बेसिक चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए. ओके. अच्छा, कोई बता सकता है मेरे को कि क्लास 10 तक जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे उसको कौन सा अप्रोच बोलते हैं? क्लास 10 तक बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते थे किसी भी इवेंट का? लाइकलीनेस पे. यस, ठीक है. हम क्या करते थे? लाइकली आउट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है. सो दिस को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है. बट लेटर ऑन वी हैव सीन कि बाद में क्या होगा, कुछ फ्लॉज निकले. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या एक हेड है एक टेल है ना. अब बट उसके बाद कुछ ऐसी चीजें, उस क्लासिकल में क्या प्रॉब्लम थी कि कुछ चीजों को हमने बाद में, जैसे कि कोई कॉइन हो सकता है बाइज्ड हो, है ना, तो उस टाइप की चीजों को क्या करता है वो नेग्लेक्ट करके चलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉइन है जो 3/4 लेट से, ठीक है, 3/4 टाइम्स क्या करता है, हेड शो करता है, और 1/4 टाइम क्या करता है, टेल शो करता है, 22 टाइप कॉइन. सो इस टाइप की चीजों को क्या करता है वो कंसिडर नहीं करता क्लासिकल अप्रोच. देन वी हैव सी क्लास 11th एंड 12th में फिर हमने क्या यूज किया? एक्सियोमेटिक अप्रोच. एक्सियोमेटिक अप्रोच कुछ एग्जाम्स के थ्रू हमने फिर सैंपल स्पेस बनाया एंड सो ऑन, रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया. ठीक है. सो एग्जाम क्लासिकल में कुछ प्रॉब्लम थी जिसको हमने एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के थ्रू, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया. ऐसा नहीं है कि हम इसका यूज नहीं करेंगे कि ये गलत हो गया, बेस पूरा ही करते हैं हम वैसे ही है, बट हाँ उनको इन चीजों को हम कंसीडर करते हैं. ऐसा भी हो सकता है पिक्चर में. ठीक है. ओके. सो दिस इज व्हाट एक्सियोमेटिक. अब इस पेपर में क्या करना है हमें? जो हमने बेसिकली 11th-12th में किया था उसको कंटिन्यू करना है, बट वी आर डिस्कसिंग द एक्सियोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी एंड देन लेटर ऑन वी सी कि इसको कैसे स्टैटिस्टिक्स में कैसे अप्लाई करना है. ठीक है. ओके. कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट, सबसे बेसिक, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट यस. कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? कोई बता सकता है क्या मतलब होता है इसका? एक एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे आउटकम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब सबका पॉसिबिलिटी सेम होगा. ठीक है. हाँ, मतलब मैं कुछ भी इस तरीके का कोई भी काम करता हूँ, लेट से कोई भी एक्सपेरिमेंट कंसीडर, मैं डाइस को थ्रो करना हो गया या कॉइन को टॉस करना हो गया. ठीक है. मतलब और इस तरीके से भी कह सकते हैं. अच्छा, अगर आपने बोला इक्वली लाइकली, तो अगर कोई 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 कॉइन है जिसपे सिर्फ हेड ही आता है, इट इज दोनों साइड, लेट सपोज हेड है, उसको मैं टॉस करता हूँ, तो उसका जो आउटकम आएगा, क्या ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? होगा, बट देन इसका सैंपल स्पेस सिर्फ हेड्स ही होगा. हाँ. सो
देखो रेंडमनेस होना चाहिए, दैट मीन्स यू कांट प्रिडिक्ट ना, पहले आप नहीं बता सकते, क्योंकि अगर दोनों साइड हेड है यू आर श्योर ना कि हेड ही आने वाला है, सो दैट्स नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसका हमें आउटकम प्रिडिक्ट ना कर पाए, ठीक है, बिफोर हैपनिंग, सो दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड सबका इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड random experiment. So how can we define it? Any experiment which has a finite or infinite number of equally likely outcomes. Equally likely outcomes पॉसिबिलिटीज का अभी डिफाइन करेंगे इसको भी, आउटकम्स का मतलब पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ओके। फाइनाइट इनफाइनाइट क्यों यूज कर रहे हैं हम? आउटकम्स हो सकता है फाइनाइट, हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है। कैन यू Yes, थिंक ऑफ एग्जांपल जिसमें आउटकम्स इनफाइनाइट हो सकते हैं? फाइनाइट को तो चलो हमें इजी so है। picking a number from the real number line. हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, इसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट, वेरी गुड, ठीक है। सो फॉर अ वाइल एग्जांपल वी कैन से टॉसिंग अ कॉइन, okay and so on, okay, okay. Next, outcome. How can we define outcome? A A possible, result of an yes, very good, random experiment. very good. A possible result of a random experiment, is called its outcome. ठीक है। Okay. Third, sample space. अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, हाँ यस, After all the collection of all the outcomes yes, very would good, be assembled space. associated with a random experiment, na? Yes, the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. Associated with the experiment. Okay. For example, the sample space associated with the experiment of rolling a dice is, बेसिकली हम इसको डिनोट किसे करते हैं? एस। ठीक है, बाकी कुछ भी यूज कर सकते हैं, यू नो 1 2 3 4 5 and 6. Okay. Next is event. Yes, what is an event? Okay. ठीक है, हम यही वाला अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट लें, इफ आई एम सेइंग कि लेट ई
let A be an event of getting a even number. ठीक है, मैंने क्या बोला? Let A be the event of getting a even number in tossing a coin. तो A क्या मिल जाएगा मेरे को? 2, 4 and 6. Is it a subset of the sample space S? Yes, sir. ठीक है, yes. So what is an event? Event is a subset of a sample space of some bigger set, ना? ठीक है. Okay. So an event is a subset of a sample space or we can say it is the set of those outcomes which are favorable to it. Example, same ले लेते हैं. In tossing a dice, X is the event of getting even number. Okay. Right. Mutually exclusive events. Yes. Anyone? So two events which do not depend on each other. Which do not Which depend depend, I think. हाँ, ठीक है. अच्छा, depend या not depend? Exclusive मतलब not depend, sorry, हाँ, not depend Okay. होना चाहिए. Yes, मतलब हाँ, मतलब अच्छा, डिपेंडेंसी की बात फिलहाल नहीं बोल, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक एक्चुअली ना. इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंसी ना, इंडिपेंडेंट है नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज अदर थिंग. फॉर अ व्हाइल लेट्स से अगर मैं एक्सक्लूसिव की बात करूं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, तो अगर दो इवेंट्स ले लेता हूं मैं, अगर एक के होने से दूसरा एकदम ही नेग्लेक्ट हो जाए, ठीक है. फॉर से मैं अगर कहता हूँ एक्स इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सो इसका मतलब ऑड नंबर्स वाले एकदम ही बाहर हो गए ना पिक्चर से, isn't it? Yes, sir. ठीक है. सो ऐसे इवेंट्स जिनका दैट मींस इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5. Yes, sir. Yes, so such events are called mutually exclusive events. ठीक है. Okay, so two events A and B are called mutually exclusive events if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of other one. Excludes the occurrence of the other event. Okay. And in this case, sets A and B are disjoint. Okay. So let's say अगर मैं कह रहा हूँ कि X is an event of getting an even number and let's say Y is an event of getting odd number.
So can we say that they are mutually exclusive? Yes, sir. Okay, yes, okay. So for example, if y is the even of getting odd number in tossing a coin, then x and y are mutually exclusive. Okay. Next we have mutually exhaustive. Exhaustive events. Exhaustive events. Events. Hmm. Yes, what about this? नहीं पता. Okay. Okay, so अगर लेट सपोज करो कि मेरे पास अगर किसी सैंपल स्पेस के अगर n इवेंट्स है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं उनका यूनियन लेता हूँ एंड अगेन आई गेट यूनियन विल बी इक्वल्स, अगर सैंपल स्पेस के वापस मेरे को क्या मिल जाता है, इक्वल मिल जाता है, देन आई से दे ऑल आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट. ठीक है. यस, फॉर एग्जांपल x एंड x क्या था इस केस में, x is 2, 4 and 6, and what is y? 1, 3 and 5. If I take the union of them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वापस से मेरे को क्या मिल गया, सैंपल स्पेस के इक्वल. So yes, they are mutual, they are exhaustive events also. Is it clear? Okay. सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव होते हैं? No, अब ऐसा हमेशा नहीं कह सकते ना. ठीक है, बिकॉज वी हैव एग्जॉस्टिव में क्या करना है, वी हैव टू टेक सारे के सारे, हमें सबके सब वो लेके चलना है ना, सबका यूनियन लेना है ना. बट एक्सक्लूसिव में मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैं किसी भी दो इवेंट्स की बात कर सकता हूँ ना. ओके. हमेशा ही तो दो. मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर मेरा एक बन रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड दूसरा बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, तो दे विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एंड हाँ. एग्जॉस्टिव वुड बी जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के उसके आ रहा है. यस यस, सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एक्सक्लूसिव जो हो वो एग्जॉस्टिव हो ही जाए, है ना. यस. यस, ओके. So how can we define? So if E1, E2, and let's say up to En are n events, n events of a sample space S, and if E1 सबका यूनियन क्या हो जाए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 En is equals to Ei, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू S. ठीक है. Then E1, E2 and so on, En are called exhaustive events. Exhaustive events. Yes. Okay. So these were some basic terms. Okay. Okay. Next we have probability state function.
probability set function. Okay. Definition: let S be a sample space and D be the set of all events. ठीक है. Regarding the sample spaces जो हम ले रहे हैं अभी कंसिडर कर रहे हैं. अगे D में क्या है, सारे मतलब D में जितने भी इवेंट पॉसिबल है एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस S, हम सब उनका क्या कर लिया हमने, एक सेट बना लिया विच वी आर डिनोटिंग विद B. ओके. एंड लेट P be a real valued function defined on B. Then P is a probability set function if P satisfies the following three conditions. Okay, before that, can you tell me what is real valued function and what is a real function? Is there any difference or they are same? Because we are considering P as a real valued function, so we must know the meaning of it. Real valued function. And एक और होता है रियल फंक्शन. क्या ये सेम है? और अगर अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है? सब दोनों का मतलब नहीं पता. दोनों का ही मतलब नहीं पता. ओके, कोई बात नहीं. अंकित, आपको पता है कुछ? हेलो अंकित, am I audible? Okay, no issue. Okay. रियल वैल्यूड फंक्शन दैट मीन्स एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, डोमेन कैन बी एनीथिंग, बट उसका जो को डोमेन है, ठीक है, आइदर वो क्या है, मेरा रियल नंबर है और एनी अदर सबसेट से दिस इज ए और एनी अदर सबसेट ऑफ रियल नंबर. सो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड. क्यों? क्योंकि रियल वैल्यू ले रहा है ना वो, ठीक है. यस, सो ऐसा रियल नंबर्स का सबसेट होगा, कह रहे हैं. हाँ, या तो आइदर कोडोमेन कैन बी रियल नंबर, होल रियल नंबर, सेट ऑफ होल, है ना, और आइदर कोई भी सबसेट हो सकता है रियल नंबर का, ठीक है. सो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं. एंड अगर मैं रियल फंक्शन की बात करूं तो ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन भी क्या होता है? रियल नंबर होता है, और रियल नंबर होता है या फिर कोई सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक है. कोडोमेन तो है, कोडोमेन तो होगा ही, ठीक है, रियल नंबर और एनी अदर सबसेट ऑफ रियल नंबर. बट यहाँ पे डोमेन भी क्या होगा? आइदर रियल नंबर होगा या रियल नंबर का कोई सबसेट होगा. सो दैट मीन्स ऐसे फंक्शंस क्या कहते हैं? रियल फंक्शंस कहते हैं. सो कैन यू टेल मी कि अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन का कलेक्शन बनाता हूँ एंड रियल फंक्शन का कलेक्शन बनाता हूँ, सो कौन किसका सबसेट होगा? कैन यू थिंक? So real function would be a subset of real valued function. Real function, okay.
रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन कुछ भी हो सकती है ना, तो रियल फंक्शन में सिर्फ डोमेन रियल होगा, तो उसका सबसेट हुआ रियल फंक्शन। रियल वैल्यू डिफाइन, ओके, दिस इज ए नॉट, ओके फाइन, ठीक है। सो बेसिक आइडिया लग गया ना हमें, व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, व्हाट इज रियल फंक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। सर एक एग्जांपल दे पाएंगे रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन का? एग्जांपल, मेरे पहले के 3 सेमेस्टर्स क्लियर नहीं है। हाँ ओके ओके ठीक है। If I say, let's say, जैसे मैं, जैसे इसे अगर मैं पी को ही कंसिडर करूं, ठीक है। सो सेट ऑफ इसमें क्या, इसमें क्या क्या आ सकता है हमारे पास सैम्पल्स पे, अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका आउटकम्स क्या 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 पॉसिबल है, अगर कोई भी सर है आउटकम ना, पॉसिबल। 1/6, यस सर। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, एक सेट बना लूं अगर मैं, ओके। तो ये क्या हो गया, ये इसको इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रियल, ये भी सबसेट है रियल नंबर का, एंड दिस इज ऑल्सो सबसेट, सो दिस इज रियल फंक्शन, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, हेड और टेल ले लेता हूँ, हेड एंड टेल, सो ये तो नहीं है ना सबसेट हमारा रियल नंबर का, यस सर। है ना, प्रोबेबिलिटीज की हाफ, so दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल, सॉरी, है ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर, बट दिस इज नॉट, सो क्या इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज रियल वैल्यू, रियल वैल्यू तो ले रहा, बट डोमेन इसका क्या है, वो इसका सबसेट नहीं है रियल नंबर का, इज दिस फाइन? यस सर। यस, सो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड होता है, ठीक है। बिकॉज ये तो चेंज हो सकता है ना इसमें, डोमेन, यस सर। it can be real, it can be a subset of real number or and not, ठीक है। सो ऊपर वाला रियल फंक्शन होगा, राइट? हाँ, ऊपर वाला, यस, ऊपर वाला इज रियल फंक्शन, नीचे वाला इज रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। जो रियल वैल्यू ले रहा है, लेने का मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ डोमेन की, डोमेन से किसी पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू लेना, दैट इज रियल वैल्यूड ना, यस, ओके, क्लियर है, यस। ओके। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का हम अगर डोमेन देखना चाहे, डोमेन कैन बी सैम्पल स्पेस और एनी अदर सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, है ना, यस सर। ओके। एंड व्हाट इज, बट ओके, सो रेंज क्या होता है इसका, कोडोमेन तो हमें पता चल गया, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो कोडोमेन तो रियल नंबर होगा ही, बट हमें पता है प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन है तो उसका रेंज क्या होगा, दिस इज एस और एनी अदर सबसेट ऑफ एस, ठीक है, दिस इज फाइन, बट यहाँ पे क्या होगा अगर मैं रेंज की बात करता सो हूँ, 0 से 1। यस वेरी गुड, 0 से क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, वेरी गुड, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन बी 0 एंड 1, यस, ठीक है। सो कौन सी थ्री कंडीशंस होती हैं, वी ऑल नो, वी हैव टू रिकॉल, फर्स्ट इज किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आइदर वो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, फॉर ऑल C बिलोंग्स टू बी, बी क्या है हमारा सेट ऑफ इवेंट्स है, तो किसी भी इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें पता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, लेस देन 1, ओके। इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी, नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिविटी, नॉन सर नेगेटिविटी, क्लास खत्म होने वाली है, लिंक फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ नहीं, इसी सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
Yes, okay. Second is the probability of the whole sample space is equals to what? 1. Yes, sir. ठीक है, इसे हम कहते हैं certainty axiom. Because okay, so this axiom is known as certainty axiom. इस चीज का सर्टेन दैट में निश्चित है कि ऐसा ही होगा. Certainty axiom. Axiom. Okay. Third, if Cn is a sequence of events in B, and all such events are mutually exclusive, that means intersection are phi. For all n not equals to n, then probability of union of Cn for n equals to 1 to infinity is equals to summation probability of Cn where n equals to 1 to infinity. So एक बार थोड़ा वाला explain कर देंगे क्या? Yes, please. Okay. For say अब हमने throwing a dice का एग्जांपल लिया था. So we have the samples पे उसके और हमने दो इवेंट्स बनाए थे. That is the x which is getting an even number, ठीक है, और एक y क्या बनाया था हमने, getting odd numbers. Okay. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. Yes, sir. ठीक है, इन दोनों का अगर इन दोनों का दैट मीन्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, ओके. द कंडीशन इज टू अप्लाई, ये वेरीफाई होना चाहिए. ओके, सो क्या क्या रहे देखते हैं. सो अगर मैं इनका यूनियन लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है, तो क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई है, सो रिकॉल करो हमारे पास ये रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So अगर intersection phi है, that means this is 0. And Yes, then sir. है ना, यूनियन क्या हो जाएगा, A union B will be समीशन हो जाएगा ना इन दोनों का. That means the sum probability of A plus probability of B. This is for 2 events and we are talking about n events here. Is this fine? यही लिखा है ना. अगर मैं सबका यूनियन ले लेता हूँ, देन किसके इक्वल हो जाएगा, सम के इक्वल हो जाएगा. दैट अभी इसका नोट भी लिखते हैं. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम, अगर देखना चाहिए. हाँ, इन दोनों का यूनियन लूँ, एक्स यूनियन वाई, ठीक है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कह रहे हैं ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. ओके, सो एक्स यूनियन वाई इज सैंपल स्पेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा LHS. ठीक है, ओके, दिस विच इज 1 वी नो. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 3/6 which is half, and similarly probability of y is 3/6 which is again half, and RHS क्या हो जाएगा, half plus half will be equals to 1. Is this fine? Yes, sir. Okay.
So few notes we have to see. If C is an event, we know कि अगर उसका यूनियन में इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेता हूँ क्या मिल जाएगा वापस मेरे को? सैम्पल स्पेस, सेकेंड सी, ये तो ऑब्वियस है, सी का किसी अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ वी गेट 5 एंड द थर्ड वन दिस वन. अगर इसको जनरलाइज लिखें हम C1 यूनियन C2 यूनियन and so on Cn, C1 plus C2 up to probability of Cn when if Cm intersection Cn is equals to 5 then m is not equals to n. ठीक है, किसी भी दो का मैं अगर क्या करता हूँ इंटरसेक्शन लेता हूँ हमेशा क्या होना चाहिए वो 5 होना चाहिए. दैट मींस ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, एंड इसको हम कहते हैं एडिटिव लॉ. क्या कहते हैं इसको हम? एडिटिव लॉ. एडिटिव लॉ. Okay, let's try to prove some basic results. Okay, so first is complement law. Complement law. क्या कहता है? For each event C belongs to B because what was B? B क्या था हमारा? Is a set of all the events. Yes, sir. ठीक है, okay. Then probability of C क्या अगर हमें निकालना हो, so we can use this 1 minus probability of C complement. Okay, so 2 okay, so since C union C complement is S. Okay, and इसका intersection क्या होता है इसके साथ 5. So that means I can apply additive law here. Yes, sir. ठीक है. So अगर मैं apply करता हूँ probability of S as they are इनका intersection 5 है, so that implies I can apply the additive law. Probability of C complement is equals to probability of S. Okay, we know this is equals to 1. ठीक है, so that implies what? Probability of C is equals to 1 minus probability of C complement. Very basic. ठीक है. To write the Yes, reason. sir. Yes. Probability of S equals to 1. Okay. Next is impossibility law. Impossibility law. The probability of the null set is 0. That is probability of 5 is 0. That means उसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं हम. That probability of an impossible event is 0. ठीक है. Getting Yes. getting a number greater than 6 when we throw a dice. ठीक है.
तो इसका सैंपल स्पेस, इसका इवेंट क्या बनेगा हमारा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का 5. Okay, Yes, and sir. the probability is 0. So this is impossibility law. So can you think how can we prove this? Yes. Okay, try take C in the previous theorem which we have done. Take C is equals to empty set 5. I think that will work too. Let's C equals to 5. Then C what is, अगर C हमारा empty set है then C complement क्या हो जाएगा, sample space, the whole sample space. Yes, sir. ठीक है. Okay. So by complement law, probability of phi is equals to probability of C is equals to 1 minus probability of C complement. And what is C complement? S. And we know probability of sample space is 1. So this is 0. Okay. Clear है ये? Yes, sir. Okay. Next is theorem monotone law. Monotone law. अच्छा, मोनोटोनिक सीक्वेंस याद है? व्हाट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस? Which is continuous. अच्छा, मोनोटोन फंक्शन ही रिकॉल कर लो, सीक्वेंस तो छोड़ो, बात की बात. यस. तो कंटिन्यूस होता था या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होता था. हाँ, कॉन्टिन्यूसली आइदर वो इंक्रीजिंग ही होगा या डिक्रीजिंग होगा थ्रू आउट इट्स होल डोमेन ना. ठीक है, Yes, ऐसा नहीं हो सकता अपने डोमेन पे कहीं इंक्रीजिंग है कहीं डिक्रीजिंग है. ठीक है, आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग थ्रू आउट से डोमेन. ओके, सो दैट इज अ मोनोटोन फंक्शन. ठीक है, तो इसको ऐसा नाम इसलिए दिया है बिकॉज if C1 and C2 are events such that C1 is contained in C2, then probability of C1 is less than equals to probability of C2. Increasing function की definition क्या होती है? If x1 is less than x2, this implies what? F of x1 is less than equals to f of x2. And what is decreasing? If x1 is less than x2, then f of x1 is greater than equals to f of x2. sir. है ना? So that's how. So that's why इस लॉ को हम क्या बोल रहे हैं? मोनोटोन. So events के लिए भी true रहता है. If C1 is a subset of C2, then probability of C1 is less than equals to probability of C2. ठीक है. So दोनों ही केस क्या इम्प्लाई कर रहे हैं? मोनोटोनिसिटी. ओके. बट यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट ही रहेगा, ये पीछे नहीं आएगा डिक्रीजिंग. ओके. प्रूफ. This has asked so many times. Okay. So हमें क्या गिवन है यहाँ पे? सबसेट गिवन है. So let's consider this. Let's say it is C1, sorry C2. And this is C2 and this is C1. Okay.
Okay, so can I write C2 as C1 union C1 complement intersection C2? Okay, let's try to visualize this part. ठीक है, C1 वाला तो क्लियर है, दिस इज फाइन. इसको विजुलाइज करते हैं, ये क्या कहना चाहता है. Okay, C1 complement, that means this part. Yes, sir. ठीक है, okay. And we have to take the इसका intersection हमें C2 के साथ लेना है. So इसका मतलब वापस क्या मिलेगा मेरे को, यही वाला पार्ट मिलेगा. होल C2 इज दिस ना, दिस इज होल C2. सो अगर इसका इंटरसेक्शन सिर्फ इतने पोर्शन के साथ लेता हूँ तो हमेशा जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट मिलता है ना मेरे को. इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा मेरे को, A मिलेगा वापस. Yes, sir. ठीक है, सो इस वाले पोर्शन में और C2 वाले पोर्शन में छोटा कौन है, कौन किसका सबसेट है, दैट दिस पोर्शन. C1 छोटा. No, not C1, this shaded portion I'm talking about. Shaded portion छोटा होगा C2 से. है ना, yes, and also this is a subset. Yes, sir. Yes, okay, so subset है, that means intersection क्या आएगा, वापस से A मिल जाएगा. Okay, so that means what is this, this is nothing but C1 complement only, है ना. Yes, sir. ठीक है, okay. So now you can see कि कैसे हमने बनाया है C2 को, how ये कैसे लिखा हमने ये वाला, है ना. दिस इज C1 कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज C1. ओके, सो इन दोनों का अगर यूनियन लेता हूँ तो वापस से क्या मिल जाएगा मेरे को, C2, द शेडेड पोर्शन यूनियन विद दिस C1, है ना. वापस से क्या मिल गया मेरे को, C2. Yes, sir. ओके, so since okay, so this implies what, and also this for in इस शेडेड पोर्शन का इंटरसेक्शन C1 के साथ क्या होगा, दोनों क्या है, फाई होगा ना इनका इंटरसेक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. Yes, sir. है ना. दिस शेडेड पोर्शन एरिया एंड द इंटरसेक्शन अगर इनका C1 के साथ लेता हूँ. ठीक है, एक बार मैं दोबारा ट्राई करते हैं इसको विजुलाइज करने का. ओके, तो दिस इज आवर C2, दिस इज आवर C1. तो अगर मैं शेडेड पोर्शन देखता हूँ, तो अगर शेडेड पोर्शन का इंटरसेक्शन में C1 के साथ करता हूँ तो फाई होगा, दैट मीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये. Yes, sir. ठीक है, दैट मीन्स आई कैन अप्लाई द एडिटिव लॉ ना, आफ्टर अप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, probability of C1 union C1 complement intersection C2. So now I can apply the additive law. C2 is equals to probability of C1 plus probability of C1 complement intersection C2. Is this fine? Since C1 intersection C1 complement intersection C2 is 5. This shaded portion is nothing but C1 complement, which is C1 complement is intersection with C2. ठीक है. Okay. Now see, I can write 5 as 3 plus 2. But if I remove this 2 from here, क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा ये. ऐसा क्यों हो रहा है? Because this 2 was positive. Is this fine? Sir, क्या बोला? Okay. What I am saying कि 5 is equals to 3 plus 2.
Yes, sir. ओके, सो अगर मैं यहाँ से 2 को रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इट इज अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस साइन में ये चेंज आ जाएगा अगर इक्वालिटी है तो। और अगर मैं एक साइड से क्या करता हूँ, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रिमूव करता हूँ, तो जिस साइड से नहीं किया मैंने वो साइड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, ओके। सो नाउ यू कैन थिंक मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से बिकॉज इट इज पॉजिटिव, Yes, sir. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, probability of C2 is greater than equals to probability of C1, ठीक है, since why, probability of, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी, is greater than equals to 0। इक्वालिटी इसलिए बिकॉज इट कैन बी 0 ऑल्सो ना, so that's why इक्वालिटी है। ओके, क्लियर है ये, Yes, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव बाउंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। बाउंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी, okay. So for each C belongs to B, probability lies between 0 to 1, okay, 2, now we know a empty set is a subset of every set, so I can write this, and C is a event because ये कहाँ belong कर रहा है, B में, so that means it is a subset of the sample space S, because event क्या होता है, sample space का subset होता है। Yes, sir. Okay, so now apply the probability function is less than equals to probability of C, मोनोटोन लॉ से लिख सकते हैं हम इस तरीके से, बाय मोनोटोन लॉ। Yes, sir. ओके, Yes, sir. मोनोटोन लॉ, ओके। इम्पॉसिबिलिटी लॉ से हम इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी एक्सियम से इसको हम 1 लिख सकते हैं, सो दिस इज द प्रूफ। ओके, सो बिफोर going to another theorem, let's do some question regarding the sample space. Yes, सर ये प्रूफ इतने छोटे हैं, वो एग्जाम में आते हैं क्या? हाँ, 1 मार्क्स स्टार्टिंग में कुछ, ओके सर। हाँ, स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, एंड देन दे आर 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क, इस तरीके से कुछ पार्ट्स बना देते हैं एंड देन कहीं में डाल देते हैं इस तरीके से ना। yes. So problem, so let S be the sample space, be the sample space A, S is equals to all those C such that C is between 0 to infinity, let C is a event contain C is a event of S be defined by C is equals to C such that
C is between 4 to infinity, and take probability function is equals to integral over the C e raised to power minus x dx. Then show that probability of S equals to 1. Also evaluate probability of C complement and probability of C union C complement. Yes. Okay. First thing we have to show that probability of S equals to 1, and probability set function किस तरीके से define है? For any event C, it is defined by this integral. Okay. So solution. So we have P over any event C is given by this. Now we have to prove this. So take S in place of C. Okay, over the C. हाँ, Yes. 2 मिनट क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ, ओके, ठीक है. सो एट एस क्या है, मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, इस तरीके से कुछ डिफाइन है. ठीक है, ऑल दो सैंपल. हाँ, हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है. हाँ, ओके. सो ये किसके बीच में है? दिस इज डिफाइंड बिटवीन 0 to infinity. ओके, एंड सी कोई भी इवेंट हो सकता है इसका, डिफाइंड बाय दिस. C is between such that C is between 4 to infinity, and probability function is defined over for any event of S is given by this integral e raised to power minus x dx over C. ठीक है, over the domain जिस पे वो define है. Okay, then we have to show that probability set function is probability of sample space is equals to 1. And then also we have to evaluate the probability of this set C complement and C union C complement. ठीक है, so probability निकालना है बेसिकली हमें इस इंटीग्रल की हेल्प से यहाँ पे. ठीक है. Okay, shall we move on? Yes sir. Okay, इसको ब्रैकेट में डाल ही देते हैं. So S देखो कहाँ पे डिफाइन है? From 0 to infinity. Yes sir. Okay, so यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रल from 0 to infinity e raised to power minus x dx. Okay, इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव ऑफ e raised to power minus x from 0 to infinity. Okay, so this is nothing but e raised to a minus infinity, and my negative positive e raised to power minus 0, that means 0 only. Okay, ये क्या हो गया? e raised to power infinity plus 1. Okay, ये क्या हो जाएगा? e raised to power e is some positive number, and positive number raised to power infinity is very is approximately infinity. E is something Yes, sir. 2.73 ना? Yes sir. ठीक है, and raised or positive power for sorry any okay, 2.73 raised to power infinity क्या हो जाएगा? Infinity. Infinity हो जाएगा. Yes, so sir. And 1 by infinity is 0. Yes sir. ठीक है, so it is 1. Okay, so this implies what? Probability of sample space is equals to 1. Okay. नेक्स्ट हमें क्या इवेलुएट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ C.
ओके, इंटीग्रल ऑफ c माइनस एक्स डी एक्स। सो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था? 4 4 से टू infinity. इन्फिनिटी ना। ओके, सो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ना कि कौन किसका सबसेट है, सी सबसेट है ना एस का, बिकॉज सी यहाँ पे क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है 4 टू इन्फिनिटी ना। ठीक है, ओके, सो दिस इज 4 टू इन्फिनिटी e raised to power minus x dx, again minus x 4 to infinity minus e raised to power minus infinity plus e raised to power minus 4, and this is nothing but 1 by e raised to power 4. Okay, how can we calculate this? दोबारा इंटीग्रल थोड़ी करेंगे, वो तो हमें पता भी नहीं है ना उसका डोमेन। सी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट, अभी हमें पता नहीं ना कहाँ पे डिफाइन है, सो कैन वी यूज दिस कॉम्प्लीमेंट लॉ? Yes, sir. So this is nothing but e raised to power 1 minus 1 by e raised to power 4. Okay, then next, probability of C union C complement. Okay, so probability of C complement, and अगर हम we know कि इसका intersection क्या होता है 5, C complement, this is 5, so this is will be 0. Okay, so probability of C we have e raised to power 4 plus 1 minus probability of e raised to power 4 1 okay plus 0. Okay, this is 1 आना भी चाहिए था। Why? Yeah. Because this is nothing but sample space. Yes, sir. ठीक है, yes, अगर हम कैलकुलेट ना भी करें तो ये ऑब्वियस था कि सैंपल इसके 1 के इक्वल ही आएगा। ओके, ठीक है, इज देयर एनी डाउट इस क्वेश्चन में या इससे पहले जो टॉपिक No, भी sir. कवर किया हमने? No, sir. ठीक है, ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, सर एक डाउट था ओवरऑल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स लेके। इट वाज कि सिंस मेरे स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स वर नॉट मतलब आई वुड से I did not study because of online. ओके, So would I require them as well, or something out of them? हाँ ठीक है ना, मतलब देखो प्रोबेबिलिटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, बट आपका वो जो क्लास 11th में थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, Yes, sir. हाँ थोड़ा बहुत वो थोड़ा बेसिक अगर पढ़ सके तो ज्यादा बेटर रहेगा फॉर द नेक्स्ट क्लास। Sir, आई सकते हैं 12th तक का I think 12th तक का maths was नहीं fine. It's just that starting 3 semesters. नहीं, स्टार्टिंग का 3 सेमेस्टर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट से कोई भी लेना देना आपका नहीं है, ठीक है, फ्रैंकली। Okay, sir. हाँ ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, लेकिन वो जो ग्रुप वाला है, ग्रुप एंड मैट्रिक्स स्पेसेस, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आपको, ग्रुप में तो पूरा वहां पे तो पूरा ही यूज होने वाला है, ठीक है। तो यस, बट इसके लिए डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा बहुत बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर रिवाइज कर सके आप, देन इट इज फाइन, विल बी गुड। Okay, sir. ठीक है, ओके।